Hi everyone, this is JP Singh. I welcome you all on my channel Medico's Maharathi. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, it's our part number second for instruments in obstetrics and gynecology. Okay, so आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. किसके इंस्ट्रूमेंट्स? ऑब्स्ट्रेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में. ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, before starting our discussion regarding instruments, I want to request all those who are new to my channel, my dear friends, please subscribe to my channel and press on notification bell icon so that you can get updates for all important upcoming videos. Okay, so let's start our discussion. And first instrument is Kocher's forceps. पहले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? Kocher's forceps, or you can also say it as Kocher's clamp. Okay, so you can see this here clearly in image. Okay, there are two blades and these two blades have teeth like structure. Okay, so let's see why this blade have teeth like structure. So my dear friends, the tips of blade have teeth so that the tissue does not slip. Okay, so tissue slip ना हो उसके लिए teeth like structure है. And this instruments is used for holding pedicles in hysterectomy. Okay, इसका use क्या है? Is used for holding pedicles in hysterectomy. And what is next? This instruments is used in hysterectomy to clamp pedicles. Okay, to hold pedicles which are then transfixed. It is also used in sulfingectomy, in ectopic or operorectomy in ovarian mass. Okay, second use इसका क्या है? Sulfingectomy in ectopic or oophorectomy in ovarian mass. This can also be used for clamping umbilical cord. Okay, जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसके umbilical cord को क्लैंप करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, एक टाइम के लिए उसको पकड़ने के लिए किसका यूज होगा? कोचर्स फोर्सेप्स का. ओके, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी फॉर आर्टिफिशियल लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स. ओके, ताकि मेम्ब्रेन्स भी रप्चर ना हो और ये होल्ड भी हो जाए, क्लैंप भी हो जाए, सप्रेस भी हो जाए. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट? So second instrument, my dear friends, is Karmans syringe. Okay, or you can say it as a syringe which is used for menstrual regulation, and it is named as Karmans syringe. Okay, and you can see the syringe in this image clearly, and the capacity of this syringe is 50 ml. इस syringe की capacity कितनी है? 50 ml. यूज किसके लिए हो रही है? Menstrual regulation and endometrial aspiration. Okay, due to its limited capacity, there occurs one complication. What kind of complication? It lead to incomplete evacuation. Okay, so इसका काम क्या है? During menstrual regulation, it is inserted in uterine cavity. Okay, with plastic cannula. Okay, so on this tip there is a rubber tube inserted. Okay, rubber tube is inserted, and this tube is inserted into uterine cavity. Okay, and this negative suction, you can see it create a negative suction, so it have capacity only of 50 ml. Okay, so for complete evacuation, the process must be repeated again and again. Okay, and at the end what happens? Little bit fluid remains there. Okay, little bit material remains there. So what is the complication? Complication is that it also lead to incomplete evacuation because of limited suction pressure. Okay, what is next instrument? Rubins cannula. Okay, Rubins cannula, and this rubber. Okay, you can see this rubber here, and this have a very important role. Okay, I will tell you how it is having important role, because when it is inserted, this rubber is here for adjustment. Okay, when this is inserted, this rubber is here for adjustment. So let's see detail about Rubin's cannula. This cannula is used for tubal patency test for infertility like HSG, hysterosulfonography, or chromoperturbation in laparoscopy. Okay, अब in HSG, a fluid is used, or you can say radio opaque iodine is used.
Okay, that is urographin. And in laparoscopy, for laparoscopy, methyl blue dye is used, okay, which is injected through cannula, and this cannula have a rubber guard which needs to adjustment. So adjustment के लिए क्या है, रबड़ है वहां पर. It prevents बैकवर्ड लीक ऑफ डाई. ओके, तो रबड़ का जो यूज है वो क्या था, ये जो डाई जो हमने लगाई है लेप्रोस्कोपी के दौरान मेथाइल ब्लू और एचएसजी के दौरान यूरोग्राफिन, इसका जो बैक फ्लो होता है ना उसको रोकने के लिए क्या है, रबर है इसके अंदर. ओके, दीज टेस्ट आर आल्सो परफॉर्म्ड आफ्टर ट्यूबोप्लास्टी. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, लीच विल्किंसन कैनुला. ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, लीच विल्किंसन कैनुला. एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो यूज्ड फॉर ट्यूबल पेटेंसी एंड it is straight instrument with conical tip. You can see here this instrument is having conical tip. Okay, you can see it, this cone is screwed in the cervix. Okay, and then the dye is injected. Okay, so किसके लिए, ये भी ट्यूबल पेटेंसी के लिए है, बट ये एक स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट है, उसकी तरह नहीं है. ठीक है, उसमें क्या था, डाई को बैक फ्लो ना हो उसके लिए क्या था, रबड़ था, डाई पहले ही इंसर्टेड हो रही थी ऑलरेडी, बट यहाँ क्या है, इसको इंसर्ट करने के बाद डाई डाई इंजेक्ट होती है. ठीक है, सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज नेम्ड एज लीच विल्किंसन कैनुला. सो दो इंस्ट्रूमेंट हो चुके हैं ट्यूबल पेटेंसी के लिए. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट, next one is Pinard fetal stethoscope. Okay, Pinard fetal stethoscope, it is used for auscultation of fetal heart. Okay, it is used in previous time, today we are not using this. Okay, a tapering rim and is applied to ear, and other side of this fetal stethoscope is applied to mother abdomen with other instrument available for auscultation of fetal heart. This is now rarely used. Okay, so मैंने जैसा बोला था अब ये rarely यूज होता है. एक जो इसका एंड है ये जो बड़ा, ये तो एब्डोमन के ऊपर होगा मदर के, ये तो एब्डोमन के ऊपर होगा, वो ईयर के पास होगा. ठीक है, ताकि हम साउंड सुन सके फीटल हर्ट की. व्हाट इज नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, Sims speculum. Okay, Sims scapulum. Now let's see detail for this. Sims scapulum is used for inspection of vagina and cervix in OPD. Okay, it retract posterior vaginal wall. Okay, अब vaginal wall के लिए भी क्या है, एक retractor यूज होता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा. You will get to see that will be available in next slide. And it is used in gynae OPD फॉर फॉलोइंग प्रोसीजर. अब गायनी में इसका क्या यूज है, फॉर टेकिंग पैप स्मीयर, इंसर्जन एंड रिमूवल ऑफ कॉपर टी, कोलोस्कोपी, टेकिंग स्वैब्स. ओके, and in used in gynae operations. What kind of gynae operation, cervix biopsy, vaginal hysterectomy, repair of vesico-vaginal fistula, hysteroscopy. Okay, and what is use of this instrument in obstetrics, this is used in obstetrics for inspection, bluish discoloration in early pregnancy, local cause for threatening abortion. Okay, and first trimester MTP, medical termination of pregnancy by suction curtains. Okay, in second trimester again it is medical termination of pregnancy by ethacrydal lactate. Okay, or you can say organism tightening or cervical and circlage. What is next, last point is that removal of organism tightening stitch at the onset of labor or at 38 weeks. Inspection for suspected rupture of membrane is done by Sims scapulum. What is next, Sims anterior wall retractor. So ये जो इंस्ट्रूमेंट है, this instrument is used with Sims scapulum during vaginal examination. Okay, visualization. So this instrument is used with Sims scapulum. It is a long instrument with blunt loops at the both end, you can see blunt loops. Okay, and making an angle for easy visualization of cervix and vagina, especially useful in case of cystocele. Okay, what is next instrument,
suction current. Okay, suction current, you can see the tip of this suction current. Okay, so here are suction process which you help us in suction, and this instrument is used for first trimester MTP. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में MTP मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम दिस सक्शन करेट इज यूज्ड. ओके, एंड यूजुअली what is the suction force of this instrument? It is 60 mmHg. The tip is blunt. I already told you tip क्या इसकी blunt है. Rotational and to fro movement are done to empty cavity. Grating sensation and gripping of the cannula indicates the procedure is completed. Okay, so process complete हो गया. उसका hint हमें कैसे मिलेगा? Grating sensation एंड ग्रिपिंग ऑफ कैनुला. ओके, सो जो कैनुला की ग्रेटिंग सेंसेशन है और ग्रिपिंग है वो हमें बताएगी कि प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? सिरडोरकर सर्कलेज नीडल. ओके, ये क्या है? सिरडोरकर सर्कलेज नीडल. दिस नीडल इज स्पेशली डिजाइंड फॉर पुटिंग स्टिच अराउंड सर्विक्स. ओके, ये नीडल किसके लिए डिजाइन की गई है? ताकि हम सर्विक्स के बाहर क्या पुट कर सकें? स्टिच. ओके, you can see this needle clearly in this image. Okay, there is a hole for putting a stitch thread here. Okay, what is next? Sponge holder or sponge holding forceps. Okay, so you can see the tip of this instrument, how it is looking. Okay, and you can see this complete instrument here and the tip is available here. Okay, so this instrument is used for holding sponge or gauze piece for painting the area before operation. Okay, so operation से पहले जब हम जो एरिया होता है उसको क्लीन करते हैं, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट हम जो यूज करते हैं उसको होल्ड करने के लिए जो होल्डर जो यूज होता है उसका नाम क्या है? स्पंज होल्डर. ओके, दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर टिश्यू डाइसेक्शन when used as sponge on holder, and this is also used for grasping the cervix. Okay, in obstetrics in organism tightening operation. Okay, so obstetrics में कब यूज हो रहा है ये? फॉर ग्रेस्पिंग सर्विक्स. ओके, ग्रेस सर्विक्स को ग्रेप्स करने के लिए यूज होता है ऑब्स्टेट्रिक में जब ऑर्गेनिज्म टाइटनिंग ऑपरेशन करते हैं. ओके, सेकेंड ट्राइमेस्टर MTP मेडिकल टर्मिनेशन टू होल्ड सर्विक्स in exploring cervix after forceps delivery. Okay, 3 sponge holding forceps are used. In LSCS, this can be used instead of green armitage for clamping the bleeding edges of uterine incision. ग्रीन आर्मिटेज इंस्ट्रूमेंट हमने पार्ट नंबर 1 में स्टडी किया है. अगर आपको उसके बारे में इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट देन यू कैन वॉच part number 1. What is meaning of LSCS? LS means lower segment caesarean section. Okay, lower segment caesarean section means the area of uterine portion. Okay, uterine portion, that is lower segment caesarean section. What is next? Umbilical cord clamp. Okay, clamp का meaning क्या था? What is meaning of clamp? Clamp means to compress something. Okay, yesterday we studied many instruments which are used for clamping. Even today we studied instruments which are used for clamping, and this is for umbilical cord. जो umbilical cord होता है उसको clamp करने के लिए जो instrument है वो ये है. Okay, so you can see here the teeth. Okay, these are not sharp teeth. These are only used for compression of umbilical cord. Okay, so its name is umbilical cord clamp. Okay, what is next instrument? umbilical cord cutting scissor. Okay, जो umbilical cord को कट करने के लिए जो सीजर है वो क्या है? umbilical cord cutting scissor. Okay, so this is for cutting umbilical cord. Okay, this scissor is used for cutting umbilical cord. What is next? Salam. Salam. Okay, Salam, you can see this instrument clearly here. The ends are like this. Okay, and it have teeth. Okay,
it have two teeth. Okay, so we can see here this instrument is used for grasping cervix. Okay, so इस instrument का use क्या है? It is used for grasping cervix. Usually anterior lip of the cervix is grasped. Okay, and it is also used for insertion of IUCD, intrauterine devices like you can say uh, copper T, and in biopsy. Okay, cervix biopsy, first trimester MTP with suction evacuation, and it is a long instrument with gentle curve. Okay, gentle curve है, and it the tip of this instrument have 3 to 4 teeth. Okay, इसमें कितनी teeth आ गए टिप के ऊपर? 3 to 4 teeth, like this will be teeth. Okay, like this. Okay, it will be like this for both hand, like this. Okay, so, and since the teeth are sharp, it is not used in pregnancy as it may cause cervical tears. Okay, so pregnancy में इसका use हम नहीं करेंगे. Okay, because it can lead to cervical tear because it is having sharp teeth. What is next? Tenaculum. It is a straight instrument and has only single bite. Previous one वाले में कितनी bite थी? 3 bites थी, but here we have only 1 bite, and it is also used for grasping cervix. Okay, it is used especially in case of hysterosalpinography, hysteroscopy. Okay, laparoscopic chromoperturbation. ओके, सो स्पेशली किस में यूज हो रहा है? ये 3 चीजों में, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन, लेप्रोस्कोपिक क्रोमो परटर्बेशन. ओके, इसका काम क्या है? अगेन वही काम है इसका, ग्रेस्पिंग सर्विक्स. व्हाट इज नेक्स्ट? Here are two extractor. Okay, one is vacuum extractor Venthouse. Okay, so this is common in both. Okay, but here we have two cup, metallic cup and C-elastic cup. Okay, so both works same. Okay, one is used in our past and one is used in our today present time. Okay, and both are used. Why? So let's see why they are used. So these are alternative to forceps delivery, causes less trauma to mother and fetus. इनका यूज क्यों करते हैं हम? क्योंकि इनका जो एक पॉजिटिव पॉइंट है वो क्या है? व्हाट इज पॉजिटिव पॉइंट? दिस कॉज लेस ट्रॉमा टू fetus and mother. Prerequisite are almost same. Available in two form, metal cup and C-elastic cup. Okay, so दो फॉर्म में यू अवेलेबल है. कौन सा भी फॉर्म यूज करो, इनका एक पॉजिटिव पॉइंट रहा है कि ये ट्रॉमा के चांसेस बहुत कम कर देते हैं फीटस और मदर के अंदर. प्रोड्यूस आर्टिफिशियल कैपुट कार्ड चिनगोन, नॉट टू बी यूज्ड इन प्री टर्म डिलीवरी. ओके, सो जो याद रखने वाला पॉइंट है वो क्या है? प्री टर्म डिलीवरी में इनका यूज हम नहीं करेंगे. ओके, मीन्स टाइम से पहले जो डिलीवरी होगी वो होगी प्री टर्म डिलीवरी. व्हाट इज नेक्स्ट? वेयर इज नीडल? दिस नीडल इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग न्यूमोपेरिटोनियम. न्यूमोपेरिटोनियम का मीनिंग क्या है? पुटिंग एयर और CO2 इन पेरिटोनियल कैविटी फॉर लैप्रोस्कोपिक. ओके, सो लैप्रोस्कोपी के लिए ये जो नीडल यूज होती है उस प्रोसेस में. ओके, सो दिस नीडल इज यूज्ड for laparoscopy and it will create a air inside the peritoneal cavity. Okay, so peritoneal cavity के अंदर एयर पहुंचाने के लिए जो नीडल यूज होगी वो क्या है? where is नीडल है, किस प्रोसेस में यूज हो रही है? लैप्रोस्कोपी में. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? Wrigley forceps. Wrigley forceps, it is a obstetric forceps for outlet forceps delivery. Okay, so during delivery time it is used, and here these two sides, two you can say two wings of this instrument, this forceps, you can see these are for capturing head in between them. Okay, after capturing head in between them, it is used for clear delivery. Okay, so व्हाट इज नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट? ओके, सो ये डिलीवरी के टाइम पे यूज होगा. इसके अंदर क्या होगा? हेड आएगा. ठीक है, टू मेक अ ग्रिप ऑफ हेड इट इज इन दिस स्टाइल. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? क्रोमिक कैटगट. ओके, ऑन राउंड बॉडी नीडल. सो दिस इज एन absorbable form of suture
मैन्युफैक्चर फ्रॉम गट ऑफ लार्ज एनिमल्स। ओके, ये क्या है, सूचर की फॉर्म है, ठीक है। इसका नाम क्या है, क्रोमिक कैटगट। एंड ये मनी किससे होती है, बनी किससे होती है, फ्रॉम गट ऑफ लार्ज एनिमल्स। ओके, एंड इट इज ब्राउन इन कलर। ओके, सो क्रोमिक कैटगट इज फॉर्म्ड फ्रॉम gut of large animal. It is brown in color. Okay, and it is treated by chemicals to delay the absorption up to 7 days. Okay, so how many time it can delay absorption, only 7 days. Okay, it is used most commonly for suturing epistomy, perineal tears, tubal ligation with modified Pomeroy method, for closing पेरिटोनियम इन LSCS। LSCS क्या था, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, एंड इन हिस्टेरेक्टोमी। सो इसके यूज यहाँ पर हैं। ओके, ये ब्राउन कलर का है, बना किससे है, गट ऑफ लार्ज एनिमल से। इसका नाम क्या है, क्रोमिक कैटगट। व्हाट इज नेक्स्ट, प्लेन कैटगट। This is a rapidly absorbable suture absorbed in 7 days and it is yellow in color. So chromic catgut था brown in color, ठीक है, और जो प्लेन कैटगट है वो ये येलो इन कलर। ओके, ये रैपिडली अब्जॉर्बल है, वो रैपिडली अब्जॉर्बल नहीं था। इट इज यूज्ड समटाइम फॉर अप्रोक्सीमेशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। ओके, so sometime it is used, and it is used for approximation of subcutaneous fat. Okay, so what is next, visceral, or you can say visceral suture. Okay, visceral gut, 10 on round body. This is a synthetic delayed absorbable suture. Okay, so ये क्या है, पहली बात synthetic delayed absorbable suture, colored violet. Okay, so ये पहले जो था वो ब्राउन का था क्रोमिक, फिर येलो था, अब ये क्या है, विसरल है, ये वायलेट कलर है। एंड दिस जेल अब्जॉर्ब्ड आफ्टर 90 डेज। सो ये जेल कितने दिन में अब्जॉर्ब होगा, 90 डेज में। ओके, वो कितने दिन में थे, 70 डेज में। इट कॉजेज लेस टिश्यू रिएक्शन देन कैटगट एंड मेंटेन स्ट्रेंथ फॉर लॉन्गर टाइम देन कैटगट। सो इसके पॉइंट्स, प्लस पॉइंट क्या है अगर कंपेयर करें कैटगट के साथ, तो ये क्या करता है, लेस टिश्यू रिएक्शन करता है, मेंटेन स्ट्रेंथ करता है फॉर लॉन्गर टाइम देन कैटगट। ओके, इट इज यूज्ड फॉर सुचरिंग यूटेरस इन LSCS, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन, एंड टाइंग पेडिकल्स इन हिस्टेरेक्टोमी। सो इसके यूजेस यहाँ पर हैं। ये बेटर क्यों है क्रोमिक कैटगट से, क्योंकि ये मेंटेन करता है स्ट्रेंथ फॉर लॉन्गर टाइम, एंड ये टिश्यू रिएक्शन है वो क्या करता है, लेस। इसका जो एब्जॉर्बेशन का टाइम है वो कितना है, 90 डेज, उनका कितना था, 70 डेज। ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट, so my dear friends, it is ethylene. Okay, ethylene, and it is a synthetic non absorbable suture। जो विसरल जो पीछे हमने देखा था वो क्या था, सिंथेटिक एब्जॉर्बल सूचर था। यहाँ पर ये एथिलाइन जो है, एथिलोन जो है वो क्या है, सिंथेटिक तो है, लेकिन my dear friends, this is non absorbable. Okay, so if you compare it with visceral, then it is non absorbable. Okay, and my dear friends, remember a difference between catgut and visceral suture. Okay, so उनमें डिफरेंस क्या था, 7 days था उसका जो कैटगट था, ठीक है, ब्राउन और येलो में थे वो, ठीक है, और उनका डिफरेंस जो था विसरल के साथ वो क्या था, 7 days का था, और वो सिंथेटिक था विसरल, ठीक है, और वो क्या थे, एनिमल गट से बने हुए थे, ठीक है। और जो मेजर डिफरेंस था वो क्या था, 7 days था कैटगट में टाइम पीरियड एब्जॉर्बेशन का, बट विसरल में क्या है, 90 days। एंड दिस इज अ टोटली डिफरेंट थिंग फ्रॉम विसरल। इट इज सेम सिंथेटिक, but it is non-absorbable suture. Okay, used for rectus sheath and skin. Cutting needle is used for tough structure. Okay, so it is used generally for tough structure like rectus sheath and skin. Okay, so my dear friends, this is all about our today's topic. So if you feel that this video is helpful, then you have to do three things. Okay, first thing is that like this video, then share this video with your friends and subscribe to my channel. Thanks to everyone. Stay safe, stay healthy.
And if you not understand anything, you can comment in comment box. You can ask any question regarding this video.